The topic that we are trying to understand is trigonometric functions. First of all, हमें ये समझना है, we need to understand how do we get all these functions. Sin theta is opposite upon hypotenuse, cos theta is adjacent upon hypotenuse, and tan theta is sin theta upon cos theta or opposite upon adjacent. Right now, we'll just be focusing on sine and cos के कैसे आते हैं, क्या होते हैं, so that we can use the calculator appropriately to get all their answers. First, let's imagine we are living in an era when we don't have scientific calculators. We can do the basic division, subtraction, multiplication, addition, but we do not have the scientific calculators. If anyone wanted to find out when these, like if I give you a function, for example, someone asks me the value of sine 20, how do I get the value of sine 20? Tell me, how do I get the value of sine 20 without the calculator? Is there any way to get the value of sine 20 without using the calculator? Sine 20 degrees. No, sine 160 भी नहीं पता. We do not have the scientific calculators. बहुत आसान सा काम है. It's not a big deal. Sine 20 की वैल्यू आपको निकालनी है. तो what will you do? You will just make a right angle triangle. इसका angle 20 degrees आप रखें. Draw a right angle triangle with an angle 20 degrees. You measure the opposite side using a ruler. You measure the hypotenuse using a ruler. And once you divide the opposite and hypotenuse which you have measured, you can tell me that is the value of sine 20. Is that right? If similarly I ask you the value of sine 25, sine 28, sine 29, sine 30, sine 31, sine 32, and so on, you can get all these values by drawing a right angle triangle, measuring the opposite using a ruler, measuring the hypotenuse, and dividing both. Is that right? ऐसा ही है या नहीं है? So let's imagine one of you is a mathematician. सही है. And he has figured out all the values from sine 0 till sine 90. He has made all the right angle triangles. He has done all the hard part. He has done all the measurements. Sine 1, sine 2, sine 3. Sine सब चलो और आसान करते हैं. 0, sine 0.1, sine 0.2, sine 0.3, and he has an entire chart. बार बार कह रहा हूँ, you need to imagine that you are living in an era when you don't have a scientific calculator. सही है ना? So for example, one of you is a mathematician. सही है ना? Ayan ने काम किया and he has developed all these values from sine 0.1, 0.2, sine 0.3, and he has all the values up till sine 90. यहाँ तक बात clear नहीं है? How did he develop all these values? He made right angle triangles, he measured the lengths, and he divided the lengths to get the value of any particular sine. Now, if I needed to use the value of sine 35, I will not do the same task again. I'll just use the values that he has. क्या values हमारी मुझे दे दो, बस मेरा काम हो जाएगा. Is that right? इन्हीं दो बातों को देखते हुए, let's tell me one thing. If I have a right angle triangle, and imagine that I'm not changing the hypotenuse, I'm just changing the angle. If I'm changing the angle and I'm not changing the hypotenuse, what is happening to my opposite? Remember, right now I'm just focused on sine. What is happening to opposite? When I decrease the angle, what happens to the opposite side? It decreases. Come hote hote, what should be sine 0? 0. Why 0? 0 divided by any value is 0, so sine 0 is 0. What happens when I start increasing the angle? Opposite increases. And when opposite increases, and provided the fact that I've kept hypotenuse constant, what should happen to the ratio? पूरी value को क्या फर्क पड़ना चाहिए? Hypotenuse उतना ही, it is not changing, and I'm increasing the opposite side as the angle increases. Ratio क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए. बढ़ते बढ़ते बढ़ते, let's imagine if I come to 90 degrees. What happens when I just come to 90 degrees? Do you see what happens to the opposite in the hypotenuse? Hypotenuse तो खत्म नहीं हो रहा, hypotenuse नहीं. Imagine this. Base खत्म हो गई. So what happens? Base खत्म हुई तो what has happened? The opposite and the hypotenuse has become same.
एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो what should be the value of sine 90? 1. So even without having Ayan's values, Ayan the great mathematician, जिसमें सारी values again ये सब हम समझ रहे हैं, it's just an analogy to help you understand the functions. So even without knowing all his values, one thing we can say for sure that if the variation from 0 to 90 degrees of sine so this must be the variation of sine from 0 to 90 degrees. Is that right? Even without knowing all the values, you know that sine 0 must be 0 at 0 degrees. I have labeled the angles on the x-axis and the output, the ratio on the y-axis. And sine 90 pe jaake it must become 1. Is that right? So these are the two things that we can say. These 2 points we can say for sure, knowing all the values. Is this clear or not? So yeah. Okay, now what about cos? The same thing, what about cos? If I were to go to 0 degrees, again, how did you get the values of cos? If you did not have scientific calculators, then we would have measured right angle triangles, divided their values of adjacent, divided by hypotenuse, and that value would have given me any particular value for cos, right? So what happens if I am on 0 degrees? बिल्कुल 0 पे अगर मैं चले आता हूँ, yes, the opposite disappears, but what happens? Adjacent and hypotenuse become equal. If adjacent and hypotenuse become equal, what must be the value of cos 0? 1. The value of cos 0 must be 1. What happens if I increase the angle? If I start to increase the angle, what is happening to the adjacent side? It is decreasing. So what should the value of cos theta be? आहिस्ता आहिस्ता होनी क्या चाहिए? As angle increases, the value of cos theta must decrease. बढ़ते बढ़ते बढ़ते, when I go to 90 degrees, what happens to the adjacent? 0. So what must be cos 90? 0. So yeah, these two extreme variations for cos and sine can be predicted even without using all the values of the example that we have used, that Ayan the mathematician found after going through the entire rigorous processes. Is that right? So these are the variations that we have understood for sine and cos. Simultaneously start constructing or sketching these graphs क्योंकि सब combine होने वाला है. हम इसको break कर करके समझेंगे. These are the variations for sine from 0 to 90 degrees, and for cos it is 0 to 90. That is how the function varies. Is this clear? Yes. Now the problem arises when we go for angles beyond 90. Remember, we have imagined we are living in an era when we don't have scientific calculators. We have calculators, but मान लेते हैं चलो we can just use them to divide. ये जो ratio निकाला हमने इसके लिए मान लेते हैं divide के लिए use किया. But scientific नहीं है, so we cannot press the button sine cosine and get the values of the functions. So because we are doing all this to understand how did we get the functions. यहाँ तक बात clear है? The problem arises when we go for angles beyond 90. क्या करें हम? The angles beyond 90. For example, if I were to measure sine 100, एक example लेते हैं for angles beyond 90. उसको भी हम split करके पढ़ेंगे angles beyond 90 को, but सबका solution एक ही लेंगे हम, सही है ना? So this is the first thing. What if someone wanted to figure out sine और ऐसी value बताओ, any value which lies between 90 and 180. Example कोई भी ले लो, any value which lies between 90 and 180 बताओ डिग्रीज में. 120 ले लो. चलो 120 में तुम लोग आधे आधे में कंफ्यूज हो जाते हो, but let me take it as 100 or 100. Example there, just example.
Now, what to do when I need to find out the value of sine 100? Remember, we have the values of sine 0 to 90. सही है. And what if somebody wanted to find out the value of sine 100? नहीं कर सकते. ये functions है ना proper. अब you know ये ratio है हमारे पास. How do you justify it with this ratio? Then सर ये opposite और hype का ratio कैसे हुआ फिर? तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? एक आसान काम कर देंगे ना. अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसको समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा. We'll do two things. जब भी ये काम करना होगा, we'll focus on doing two things. Number one is, हाँ नहीं कर सकते हम. We'll say make, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. The problem is what to do when we have angles beyond 90. The first thing लिख लो उसको. We'll do is make acute angle with the x-axis, and second is consider the coordinate axis. Make acute angle with the x-axis and consider the coordinate axis. What does that mean? दोनों बातें भी समझ आ जाएगी. Note it down. I'll erase it right now to make you understand the entire figure. Coordinate axis किसे कहते हैं? The common name for x and y axis दोनों को मिलाकर जो नाम कहा जाता है वो coordinate axis कहा जाता है. So if you do these two things, you will be able to figure out all the ratios. Okay, we just took an example of sine 100. If I were to figure out sine 100, how will I figure that out? Ayan, the great mathematician that we have just imagined, सही है ना, he has told us कि सर आप ये दो काम कर लें, आपके पास सारे साइन कॉस सब आ जाएगा. You don't worry about anything. मैं कहा ओके भाई, let's see. So if I were to figure out sine 100, ये मेरा एंगल है 100 बना हुआ है. What will I do? I'll make acute angle with the x-axis. इसका नाम अल्फा रखते हैं हम. What is the value of alpha right now for this example sin 100 के लिए? उसने कहा सर आप sin 80 की वैल्यू कंसिडर कर लें. In order to find the value of sin 100, आप sin 80 की वैल्यू ले लेंगे. तो एक काम है. What else do we need to see? ये तो एक चीज देखिए ना, हमने दो चीजों पे फोकस करना था. और दूसरी चीज क्या देखेंगे हम? y और x एक्सिस दोनों देखेंगे. कंसिडर द, सर क्या देखेंगे y और x एक्सिस में? What will we focus on? हमें ये देखना है कि कौन सी चीज पॉजिटिव है और कौन सी चीज नेगेटिव है. So if I draw a triangle here, यहाँ पे मेरे पास what is positive and what is negative? Opposite क्या है? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये वाली ऑपोजिट, अल्फा का ऑपोजिट क्या है? पॉजिटिव है. What about adjacent? Adjacent is negative and opposite is पॉजिटिव. हाइपोटेन्यूज को तो पॉजिटिव ही रखते हैं. हाइपोटेन्यूज को नहीं छेड़ते. कोई टेढ़ी लाइन है, सही ना, स्लांट लाइन, तो उसके डिस्टेंस तो हम पे नहीं करते, उसको पॉजिटिव ही रखते हैं. ये क्योंकि x और y एक्सिस से लिंक हो रहे हैं तो इनको पॉजिटिव नेगेटिव देखा जा सकता है. सो वी नीड टू कंसीडर द टू थिंग्स. तो sin 100 निकालने के लिए वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ sin 80. एंड व्हाट एल्स आर वी डूइंग? वी आर लुकिंग कि भाई ये कौन, तो इनमें से पॉजिटिव तो नहीं है. ऑपोजिट क्या है? पॉजिटिव है. और हाइपोटेन्यूज भी क्या है? सो द रेशियो विल रिमेन पॉजिटिव. The ratio will remain positive. So sin 100 की value will be obtained from sin 80. और sin 80 की value निकाल चुका है. I'm not using calculator. I'm using the value that Ayan, the great mathematician, has figured out for us, right? sin 80 की value उसकी ले ली और मैंने कहा sin 100 भी वही होगा. क्यों होगा? sin 80 में भी वही रेशियो मेरे पास बन रहा है, नहीं बन रहा? ऑपोजिट और हाइप का ही रेशियो ले रहा हूँ. Is that right or wrong? Okay, what if I need to figure out इसी तरीके से cos 100, then what? अब what to do? Acute angle with the x-axis. What is the acute angle with the x-axis? 80 बन रहा है इसकी एग्जांपल में भी. और cos 80 की वैल्यू तो मैं लिखूंगा. I'll use the value of cos 80. कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. This is just an example. 100 ली है समझाने के लिए. अभी 90 से बड़े एंगल्स में आए ना, आहिस्ता आहिस्ता we'll understand everything. Cos 80 तो हमने ले लिया, but tell me what will be the ratio in this quadrant? क्या होगा रेशियो? एडजेसेंट क्या है मेरे पास? एडजेसेंट पॉजिटिव और नेगेटिव? एडजेसेंट नेगेटिव है, तो अब ये रेशियो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. सर cos 80 वाली वैल्यू ले, साथ माइनस जरूर लगा लीजिएगा. cos 80 वाली कहां से ली?
भाई आयान ने इतना ज्यादा काम हमें करके दिया है, उसके चार्ट उठा लेंगे और नेगेटिव लगा लेंगे, इसके साथ क्या मसला। ये असल चीज है। कंसिडर द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है देखो कि वेयर इज एडजेसेंट ऑपोजिट, कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। इसी तरह अगर tan 100 किसी को लेना हो, देन व्हाट tan 80 की हेल्प तो लेंगे ना, क्योंकि एक्यूट एंगल तो tan 80 है। क्यों ऑपोजिट पॉजिटिव एंड एडजेसेंट इज, तो रेशो। एक और आसान तरीका, जस्ट टोल्ड यू tan साइन अपॉन कॉस होता है, साइन इज पॉजिटिव एंड, तो फिर tan नेगेटिव हो जाएगा। तो tan 80 की वैल्यू ले, tan 80 से न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कैसे आई सर? अरे उस बेचारे ने इतने ट्रायंगल्स बना के मेजर कर करके लेंथ डिवाइड करके निकाली है, एंड यू जस्ट डिवाइड द टू वैल्यूज टू गेट योर वैल्यू ऑफ tan 100। उससे वैल्यू को लेंगे और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ tan 100। इज दिस क्लियर? सो व्हाट डिड वी फिगर आउट? इस एग्जांपल में हमने क्या देखा? द फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको 0 से 90 वाला है, इसको हम कहते हैं ए। What does A mean? All positive. इसके अंदर sin भी positive आया था, cos भी positive आया था, and tan was also positive in this one. What about the second quadrant? Which trigonometric function did you find positive in this one? सिर्फ sin positive आया. So we name it as S. Yes, yes, yes. We are getting there. We are getting there. Don't worry. Yes, I know, I know, I know. The problem remains the same. And what is the problem? जरा मुझे दोबारा problem बताओ. For angles beyond 90. This is A and S. Okay, now what if ये दो quadrants हो गए, first है A, second is S. What if the angle is in the third quadrant? What if the angle is in the third quadrant? अब ये कैसे होगा, ये सारा काम किस्सा कैसे होगा? टेक एन एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगेन कोई भी एग्जाम्पल लो, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, एनी वैल्यू, ऐसी वैल्यू लो जो 180 से ज्यादा हो एंड 270 से कम हो, एनी वैल्यू। बोलो तुम लोग, बताओ क्या होगा। कर लें, 200 हो गए। अयान द ग्रेट मैथमेटिशियन की सजेशन पे चलते हुए अगेन, अब वी केम टू अयान, भाई यू आर अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन, टेल अस द वैल्यू ऑफ sin 200। प्रॉब्लम क्या है सर? ये तो इतना बड़ा एंगल है, इसका राइट एंगल ट्रायंगल कहां बनेगा? तो सॉल्यूशन पहले आ चुका है, एक ही बात, द सेम प्रोसीजर अप्लाइड एवरीवेयर। व्हाट वाज द टू थिंग्स दैट वी नीड टू डू? मेक acute angle with the x-axis, and the second thing that we had to do was consider the coordinate axis। तो इसका acute angle with the x-axis कितना बनेगा? What will be the acute angle with the x-axis? अगर for example this will be the acute angle with the x-axis, इसका नाम रखा हमने alpha, right? And example, just for an example, we are using the value of sin 200. How do we get the value of sin 200 now? बना लिया acute angle, acute angle बनेगा कितना है तो बताओ? 20। सर यूज द वैल्यू ऑफ sin 20। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज वही है ना, रेशियोज है ना। एंड व्हाट एल्स डू आई नीड टू सी? दूसरी बात तो देखी नहीं, कंसीडर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव, ये स्लांट लेंथ, उस पे नहीं कमेंट करते। व्हाट अबाउट द ऑपोजिट? इज ऑपोजिट पॉजिटिव विद दिस क्वाड्रेंट और नेगेटिव? नेगेटिव। तो व्हाट विल बी द रेशियो? रेशियो वैल्यू वही रहेगी न्यूमेरिकल, बट इट विल जस्ट बिकम नेगेटिव। इज दिस क्लियर? ये बात समझ आई है? Okay, what about cos? If someone had to find the value of cos 200, what will you tell him? And a person does not have a scientific calculator, but he has all the values of sine and cos 0 to 90. आप क्या कहेंगे उसका? आप कहेंगे cos 20 की वैल्यू ले लो, क्योंकि acute angle with the x-axis is this, and positive होगा, adjacent क्या? What is adjacent in this one? Yes, तो सर इसमें the वही numerical value वही होगी, but it will be with a negative sign. अच्छा, what if someone wants to find out tan 200 then?
Very good. Tan 20 with a positive. Why? Because cos and sine जब दोनों negative हो गए तो tan will be positive. Is this clear or not? So what did you come to know that in this quadrant, what is positive? Just the tan. Is this clear? Moving on to the fourth quadrant. What if I have the angle which lies in the fourth quadrant? Yes. Any example? Any example that you want to relate it to? बता दो तुम लोग बताओ any example, any value. So 270 that should be greater than 270 and less than 360. 320 लिखो चलो यार नाराज नहीं होना. Sine 320. Example है. Again acute angle with the x-axis बनाएंगे. पहले मैं अल्फा लिख देता हूँ which is acute angle with the x-axis को reference angle भी कहते हैं. Okay. So now you want to figure out sine 320. How do you do that? What is your acute angle with the x-axis? Pura complete, the entire cycle would have been completed. That would have been 360. Q 270 minus. What is your angle? 320. So 40. So you will take the help of sine 40. But positive or negative? Why? Opposite जो बनेगा ऐसे acute angle की जो opposite side है that will be negative इसीलिए. अच्छा, what if I were to find cos 320? I will take the help of cos 40. बेस क्या हो गया? एडजस्टेंट क्या हो गया अल्फा का? पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव cos 40. एंड इसी तरह if I were to tell you tan 320, तो tan 40 कितनी वैल्यू होगी but with a negative sign. So what did we come to know that in this quadrant only cos is positive. Okay. Now another thing, इसके ग्राफ्स भी साइन और कॉस की तरह देख लेते हैं. ये चीज तो हमें क्लियर होगी ना कि कहाँ कौन पॉजिटिव है और नेगेटिव है. 0 to 90 का ग्राफ तो हमने किया हुआ है. Okay. Now when we went for angles beyond 90, we were looking at this right angle triangle. Is that right or wrong? So if I was at 90, sin की वैल्यू क्या थी जब मैं 90 बता तो? sin 90 क्या था? सात ग्राफ बना हुआ होगा. 1 था. What if I go for angles beyond 90? और से देखो, if I go for angles beyond 90, what is happening to my opposite side? कम होते होते it is positive, but the ratio is decreasing, and eventually यहाँ पे क्या हो गया? 0. So if I go to from 90 to 180, this is how sine behaves. So yeah, and if I were to go from 0 to 180, this is the variation of sine. 0 से 1 हुआ and then 1 से 0. Okay. What if I go from पहले साइन कंप्लीट कर लेते चलो. Now if I go from 180, 180 पे साइन की वैल्यू क्या थी? 0 थी. Now if I went for angles beyond 180, this is the right angle triangle that I was focusing on. So what will happen if I increase the angle? What is happening to the opposite side? बिल्कुल बराबर होगी तो 270 पे जाके होगी ना. But ये रेशो तो बढ़ेगा, but the magnitude will increase. But will this be positive or negative? Negative. The ratio is negative, but the magnitude is increasing. आहिस्ता आहिस्ता वो 270 पे जाके कितना हो जाएगा? -1. Very good. 270 पे sin becomes -1, 180 पे 0 था, and then 270 पे it becomes -1. And then I went from
270 जहां पे -1 था, आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, what is happening to the opposite side? And it decreases to eventually what? 0. You can see the opposite side. This is the opposite side now. Make an acute angle with the x-axis, so it decreases to 0. So it becomes at 360. It again becomes 0. Yes. So this is your variation for sine. It goes from 0 to 90, then 90 to 180. It again becomes 0 and -1 and 0. Sine and cosine, दोनों कभी भी they can never be greater than 1 or lesser than -1. Why? Look at the ratio. Hypotenuse कभी भी छोटा नहीं हो सकता. बराबर हो गया 1 हो गया. Sine and cosine both can never be greater than 1 or lesser than -1. सही है ना? tan हो सकता है बिल्कुल. tan इसलिए है ही नहीं ना hypotenuse का ताल्लुक. Okay, what about cos? क्यों बना हुआ है वही तो देखो ना. When I am on 90 पे cos की वैल्यू क्या हुई थी? What happened to the adjacent side? 0 हो गई थी. And then what is happening to the adjacent if I go from 90 to 180? It is increasing, but the ratio is positive or negative? Negative. So the magnitude is increasing technically, and the ratio overall negative में ही वो और negative, and it is becoming more negative, and eventually 180 पे it becomes what? नहीं, क्यों 180 पे? -1. So this is the variation. 0 say it goes to -1. Yes. And then if I go from 180 till 270, what is happening to the adjacent side again? Adjacent. This is the adjacent. Decrease होते होते it eventually becomes 0. So 360 पे cos की वैल्यू क्या हो जाएगी? Sorry 270. My bad. 270 पे it will again become 0. And then what about adjacent and hypotenuse? Same हो गया. देखो यहाँ पहुंचते. So the value in both are positive. So the value will again become 1. सही है. So these are the basic 4-step variation of sine and cosine. Cosine की 4-step variation हमने क्या सीखी है? From 1 it goes to 0. Then 0 से the second step, third step में -1 से 0, and then 0 to 1. These are the 4 steps. और sine के 4 steps क्या हुए? 0 से it goes to 1, and then 1 से 1 से 0, 0 से then -1, which is the third step, and then -1 से 0. This is the 4th step. ये periodic functions कहलाते हैं. अगर मैं इनकी ये मूव कर दूं, आगे भी इसी तरह कंटिन्यू होंगे. देख लो जरा. If I go from -360 to 720, these are the variations. वो आगे वही चीज कंटिन्यू होती है, पीछे भी वही चीज कंटिन्यू करते हैं. And same goes for cosine as well. Clear है?